Now the next question is, if cosecant theta minus sin theta is equal to m and secant theta minus cos theta is equal to n. If cosecant theta minus sin theta is equal to m and secant theta minus cos theta is n, then prove that m square n whole power 2 by 3 plus mn square whole power 2 by 3 is equal to 1. Cosecant theta minus sin theta is m, secant theta minus cos theta is n, then prove that m square n whole power 2 by 3 plus mn square whole power 2 by 3 is 1. फर्स्ट ऑफ ऑल हम m का वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, n का वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी हैव m is equal to, what is m? Cosecant theta minus sin theta, m वैल्यू. इसको सिंप्लीफाई करो. So m is equal to, cosecant theta can be written as 1 by sin theta. Cosecant theta can be written as 1 by sin theta because it's a reciprocal of sin, minus the sin theta you write as usual sin theta by 1. So m is equal to sin theta और 1, sin theta और 1 का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम sin theta, इन दोनों का एलसीएम sin theta, 1 into 1, 1 minus sin theta into sin theta, 1 into 1 is 1 minus sin theta into sin theta is sin square theta. So m is equal to 1 minus sin square theta, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है. Sin square theta plus cos square theta is 1. So sin square theta को अगर मैं इधर लेके आ जाऊंगा, what I get here, cos square theta is 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square theta is how much? Cos square theta. So इसके प्लेस में मैं लिख सकता हूँ cos square theta by sin theta. So m का वैल्यू मैंने लिया है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है. इसी तरह n का वैल्यू लेकर भी उसको सिंप्लीफाई करो. n इज इक्वल टू व्हाट? secant theta minus cos theta. n is equal to secant theta minus cos theta. So n is equal to, secant is the reciprocal of cos. Secant is the reciprocal of cos, no? So secant theta can be written as 1 by cos theta. Secant theta is the reciprocal of cos theta, so secant theta can be written as 1 by cos theta minus cos theta means cos theta by 1. So n is equal to cos theta और 1 इन दोनों का एलसीएम, cos theta और 1 इन दोनों का एलसीएम cos theta, 1 into 1, 1 into 1 is 1 minus 1 into 1 is 1 minus cos theta into cos theta is cos square theta, isn't it? Cos theta into cos theta is cos square theta. So n is equal to 1 minus cos square theta. यहाँ sin square theta plus cos square theta is 1. No, इस cos square theta को अगर मैं राइट साइड में लेके आ जाऊंगा, 1 minus cos square theta is 1 minus cos square theta is how much? Sin square theta. So 1 minus cos square theta के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ sin square theta by cos theta. So अभी तक मैंने LHS वैल्यू नहीं लिया है, सिर्फ m का वैल्यू लिया है, उसे सिंप्लीफाई किया. n का वैल्यू लेकर इसे सिंप्लीफाई किया है. अब LHS का वैल्यू लो. दिस इज LHS. ये मुझे प्रूव करना है. लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ LHS. LHS is m square n whole power 2 by 3 plus m
n square whole power 2 by 3. m square n whole power 2 by 3 plus mn square whole power 2 by 3. That is equal to m square. m square, m का वैल्यू ये है ना, दिस वैल्यू, m का वैल्यू कितना है, cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा. यहां रख दो इसके प्लेस में, m के प्लेस में. So I am using square braces. M square, m value is this, m value cos square theta by sin theta. Cos square theta by sin theta is the m value. This is m value. m का square है, so square into n value. n value is this, sin square theta by cos theta whole power 2 by 3. Isn't it? This is m square n. This is n value. m square into n whole power 2 by 3 plus m value. यहां देखो m n square, m का वैल्यू कितना है, cos square theta by sin theta. Put it here, यहां रख दो. That is cos square theta by sin theta into m का वैल्यू कितना है, cos square theta by sin theta. इसका वैल्यू मैंने रख दिया है, into n square है, n का वैल्यू कितना है, दिस इज sin square theta by cos theta. नो, दिस इज n square, n का वैल्यू यहां रख दो. So that is sin square theta by cos theta whole square whole power 3 by 2. Sorry, whole power 2 by 3. Please observe, यही सबसे important है. I have taken the value of LHS, which is m square n whole power 2 by 3 plus mn square whole power 2 by 3. m का वैल्यू क्या है, दिस इज, ये वैल्यू लेकर मैंने यहां रख दिया है m के प्लेस में. यहां और यहां मैंने रख दिया है, देखो cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा. n का वैल्यू यहां और यहां रख दिया. n का वैल्यू कितना है, sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा. नो, सो sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा यहां रख दिया, यहां sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर है. दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा होल स्क्वायर है. cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा होल स्क्वायर, तब क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज cos पावर 4 थीटा बाय sin theta whole square means sin square theta. So cos square theta whole square is how much, cos power 4 theta by sin theta whole square is sin square theta into, यहां पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, sin square theta. This is sin square theta by cos theta. देखो cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज cos पावर 4 थीटा बाय sin थीटा होल स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा होल पावर 2 by 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाय, दिस इज cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर क्या होगा, साइन पावर 4 थीटा. साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज साइन पावर 4 थीटा बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 2 by 3. Now here sin square theta, this sin square theta gets cancelled. This cos square theta, this cos square theta gets cancelled. So that is equal to cos power 4 theta by cos theta. Algebra में ऐसा अगर होगा तो a cube by ये अगर है, फॉर एग्जाम्पल a पावर 4 by ये अगर है ऐसा, तब हम क्या करेंगे, a पावर 4 by ये है, इसका मतलब है ये 1 times are ये a cube times gets cancel, isn't it? a पावर 4 by ये अगर होगा तो ये 1 times are ये a cube times gets cancel. तो यहाँ cos power 4 theta by cos theta है, so cos theta 1 times r, so here cos theta 3 times r, it means cos cube theta. Here sin theta 1 times r, here sin theta 3 times r और sin cube theta. तो यहाँ क्या बचा है, cos cube theta बचा है.
cos cube theta, cos cube theta whole power 2/3 प्लस यहां sin cube theta whole power 2/3, isn't it? नेक्स्ट cos क्यूब थीटा, इस cos क्यूब थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, cos थीटा होल क्यूब, cos क्यूब थीटा मतलब cos थीटा होल क्यूब होल पावर 2/3 प्लस sin क्यूब थीटा को मैं कैसा लिख सकता हूं, sin थीटा होल क्यूब होल पावर 2/3. cos क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा होल क्यूब, sin क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा होल क्यूब. ये पावर 2/3 एज यूजुअल है. और एक फॉर्मूला है अलजेब्रा में, a पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n. तो दिस इज ये, दिस वैल्यू इज ये, दिस इज m, दिस होल इज n. So a पावर m होल पावर n, a पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, which is equal to cos theta whole power 3 into 2/3, 3 into 2/3 plus sin theta a power m whole power n, that is a power m into n, sin theta whole cube whole power 2/3, sin power 3 into 2/3. So isn't it? ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट आई हैव हियर, दैट इज इक्वल टू cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू cos थीटा होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा होल स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला which is 1. So which is the value of RHS? So LHS value is m square n whole power 2/3 plus mn square whole power 2/3. m square n whole power 2/3 plus mn square whole power 2/3. इसको सिंपलीफाई किया है, फाइनली मैंने 1 है करके प्रूव कर दिया, which is the RHS value. Okay.